Assalamualaikum. It's your third lecture of maths from chapter number 1, numbers to 100,000, and lesson number 3 today is number patterns, and we are going to learn it from your book, page number 9. Example number 1, what number is 1000 more than 97,000? Here you have to tell if 97,000 में आप 1000 बढ़ा दें तो ये नंबर क्या बनेगा. सो जब भी आपने नंबर बढ़ाना है you have to do addition. Okay, so let's observe these number discs. We have 9 10,000s and we have 7,000s over here, and we have to add one more 1,000 into this. So जब हम इसमें one more 1,000 add कर देंगे, then this number will be 98,000. Below is the number pattern line. Let's observe it. The first number from left side is 90,000, and when you add 1,000 in this 90,000, it becomes 91,000. Then one more 1,000 is added, the number is 92,000, then 93,000, 94,000, and it moves like that. So observe one thing over here कि जब भी आप एडिशन करते हैं तो आप अपनी नंबर पैटर्न लाइन में फॉरवर्ड मूव करते हैं. ओके, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ सेम पेज 9. What number is 100 less than 53,600? Here you have to tell that if you take out 100 from this 53,600, what will you get? Okay, so जब आपने निकालना है, लेस करना है, कम करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए यू विल डू सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स चेक दोज नंबर डिस्क्स. वी हैव 5 10,000s, वी हैव 3,000s and 600s, and we have to subtract this 1,000. When we will subtract this 1,000, there will be only 500s left, so the number will be 53,500. Now let's observe the number pattern line over here. From right side it is 54,000, then you have subtracted 100 over here, and the number is 53,900. When one more 100 is subtracted, the number is 53,800, then 53,700. And now you can see that in subtraction number patterns you have to move backward. Okay, next is page number 12 and question number 1, fill in the missing numbers, and I am going to tell you that how you have to solve this. Now let's check this video. Here question number 1 is fill in the missing numbers, and A part is 10 more than 39,876 is dash. Here you have to add 10 in 39,876 to find out that it is how much more. Okay, so 39,876 plus 10, 6 plus 0 6, 7 plus 1 8, 8, then 9, and then 3. So the answer is 39,886. Part number B, 100 less than 47,553 is dash. Here you have to subtract 100 from 47,553, and let's check the answer. Minus 100. So 3 minus 0 is 3, 5 minus 0 is 5, 5 minus 1 is 4, and then 7, and then 4. So the answer is 47,453. Next, part number F. Dash is 1000 less than 81,022. यहाँ पे आपने ये बताना है कि 81,022 में से अगर आप 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा. सो 81,022 माइनस 1000. सो 2 minus 0 2, 2 minus 0 2, then 0, then 1 minus 1 0, and 8. So the answer is 80,022. Okay, now let's move to part G. Dash less than 10,298 is dash is 10,288. यहाँ पे आपने बताना है कि 10,288 is how much less than 10,298. So let's check it by doing subtraction again. 10,298 minus 10,288. So 8 minus 8 is 0, 9 minus 8 is 1, 2 minus 2 0, 0, and then 0. So 10,298 is 10 less than 10,298. The next is part number K. Part number K में 60,700 is dash more than 59,700. Subtract 60,700
में से 59,700. Okay, let's check it. 60,700 minus 59,700. Okay, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0, 0 again. Then you have to borrow 10 minus 9, 1, and then 0. So the answer is 1,000 again. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आप 60,700 में से 59,700 को माइनस करें तो यू कैन ऑल्सो गेट योर आंसर कि 60,700 इज़ 1,000 मोर देन 59,700. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. And first let's check the answer. Now you have to solve this question number 1 yourself, and then you can check your answers in this video. All the answers are given from part number A to part number M. Okay, now question number 2 of the same page number 12 is complete the number patterns. Now there are 3 parts, A, B and C. सबसे पहले आपने हमेशा ये ऑब्जर्व करना है कि नंबर पैटर्न फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है. इफ़ इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड मीन्स यू हैव टू डू एडिशन, एंड इफ इट इज़ मूविंग बैकवर्ड देन यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. ऑब्जर्व पार्ट नंबर A, 17,500, 18,000, 19,000. इट मीन्स इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, सो इसमें क्या होगी, डेफिनेटली एडिशन होगी. एंड देन इफ़ यू विल ऐड 1,000 more over here, then it will become 20,500 and then 21,500. Part number B में you have to observe 49,678, 49,578. अब इसमें क्या है, नंबर कम हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी. सो यू हैव टू मूव बैकवर्ड. और अब आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करें कि कौन सी प्लेस चेंज हो रही है. यहाँ पे 49 इज सेम, देन यहाँ आगे इट इज़ 6 एंड इट इज़ 5. सो इट मीन्स 100 प्लेस में चेंज आ रहा है. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम दिस एंड यू विल गेट 49,478 योर आंसर. देन 49,378, 49,278. नाउ पार्ट नंबर C, 32,883, 32,893. सो अगेन यहाँ पे बढ़ रहे हैं नंबर, इट मीन्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड, सो यू हैव टू डू एडिशन. और अगेन चेक करें किस प्लेस में चेंज आ रहा है. यहाँ पे दिस 10 प्लेस इज गोइंग टू चेंज. हियर इट इज़ 8 एंड हियर इट इज़ 9. सो इट मीन्स आप इसमें 10 ऐड करके देखें तो यू विल गेट योर आंसर 32,903 एंड देन 32,913 एंड देन 32,923. ओके, so your homework of today's lesson is you have to solve page number 9 and 12 of book, and you have to solve it on your books. Inshallah it would be easier for you to solve it by after listening this lecture. Okay, Allah Hafiz.